What a spectacular week for Indian science. मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? I said spectacular week for Indian science, yaar. I didn't say what a terrible week for chaplus anchors. Script ढंग से पढ़ो. The moon is Indian. India goes where no nation has gone before. India lights up the dark side of the moon. चांद पर भारत उदय. चंदा मामा के घर भारत माता. By 5:45 p.m. on Wednesday, the entire nation was watching breathlessly. ISRO's YouTube live stream created a record. More than 8 million people tuned in live. At the time of recording this show, it has 70 million views. And truly, ISRO's live stream was the best way to watch those historic 17 minutes. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल, हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के. हिंदी में एक और कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. हिंदी या उर्दू? If you decided to watch the landing on Times now, although I really don't know why you would decide that, but if you did decide to do that, then your screen would have looked a bit like this. Now we are approaching the moon's surface. We were hovering and approaching the moon's surface. Exciting. Screen पे है मोदी जी. इसरो कंट्रोल रूम से भी लाइव फीड आ रही है और बगल में है 4 डिब्बे. नंबर 1 डिब्बे पे हैं नविका कुमार. We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. And you can also see Honorable Navika ji critically trying to hog attention here. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. I have the group editor Navika Kumar with me at this crucial moment. ISRO control room में जो हो सो हो, हमें बस नविका की आवाज सुननी है सबसे पहले, because it's her moment in the sun. What can I say? This is the moment India is waiting for. Yes! Just look at this newsroom. Just look at this. Amazing, guys! Yes, it was a great moment for India indeed, and we would have loved to see the men and women behind it full screen rather than hearing you. वैसे टाइम्स नाउ कुछ भी ठीक से नहीं करता. Guys, it was impossible to see you scream जय हो in that small little window. Footage खाना ही था तो ढंग से खाते. You should have learned from India Today. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. Hey, wait! That ISRO scientist looks a lot like Kalie Purie. Oh, she is Kalie Purie. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. And India Today decides that that was a great time to sneak in a visual of their boss wiping her tears. बेगानी शादी में अब्दुल्ला इमोशनल. कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आपका देश का साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने में. रिया का काला जादू, मुस्लिम कैसे वीडियो गेम जिहाद करते हैं, मंदिर मस्जिद, रामदेव के पास है कोरोना का क्योर. ये सब दिखाने के बाद ही तो आज भारत इस मकाम पे पहुंचा है. Such an emo moment. I'm really surprised that India Today didn't get Kalie Purie to dance with Modi ji in this India Today cartoon. Oh, we are the best. 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 Yes, we are best. If extreme cringe and extreme chaploosi got married, it would give birth to India Today's So Sorry segment. We are really sorry. Just put on your headphones and listen to the chorus of this song, if you can call it that. I'll black myself out so that you can just listen to the chorus without any distractions. We are the best. We are the best. We are the best. Yes, we are best. We are the best. We are the best. We are the best. Yes, we are best. ये क्या अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी गा रहे थे कोरस में? We are the best. We are the best. Yes, we are best. We are the best. We are the best. We are the best. Yes, we are best.
क्या फायदा वैसे इतना सब कुछ करने का इंडिया टुडे? जो कुछ कर लो, बीजेपी वाले फिर भी तुम्हारे एंकर्स की बेइज्जती करते हैं। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो जाएगा। इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? हादसे से आगे बढ़ते हुए गुल्लू की तरफ चलते हैं। लेकिन आज क्योंकि बड़ा दिन है इसलिए बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़ा दिन, एक बड़े दिन पे बड़ा मेहमान कौन हो सकता है? मेरे साथ पहले मेहमान जुड़ रहे हैं बाबा रामदेव। अरे 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 रामदेव जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। खाइए, आप भी फुटेज खाइए। मैं भी कुछ देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो WHO नहीं कर पाया। वो बीमारियों के क्षेत्र में हम पतंजलि से करेंगे। लैंडिंग से पहले रामदेव अपना गुणगान आज तक पे गा रहे थे। हमने भी 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में छापे हैं, तो हम तो विज्ञान के को साथ में लेकर के चलने वाले सहधर्मी उसके। This man misled the entire nation during a pandemic. He falsely claimed that Coronil is cure for corona to make profit. And he is a special guest on channels on such a huge victory for science. रामदेव, श्री श्री रविशंकर, भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा जी, डिफरेंट टाइप्स के एस्ट्रोलॉजर्स, ऑल दीज गाइज वर गेस्ट्स ऑन न्यूज डिबेट्स ऑन चंद्रयान। इस सब के बीच बस सदगुरु रह गए। हाउ कम नो वन थॉट ऑफ इंटरव्यूइंग हिम? राम रहीम इज ऑल्सो आउट ऑन बेल, उसको भी बुला लेते। इन अटेंशन जीवीज को इसरो के लीडरशिप से कुछ सीखना चाहिए। We as a country have so much to learn from men and women who led this mission. Hard work, dedication, focus, and above all, humility. ISRO Chief S. Somnath spoke right after the Prime Minister spoke, and just see what he does first. Let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan-3 is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. He thanked his team and gave them the credit and all the attention they deserved. Unlike हमारे TV news के कुछ दिग्गज लोग, hogging precious screen time that they did nothing to deserve, and then using ISRO's achievements to do some more chaploosi. Just listen to what the ISRO chief had to say some more. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan-1, continued in Chandrayaan-2, and Chandrayaan-2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan-3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work. Incremental leap. Leadership is about recognizing everything that has allowed us to be here today at this moment. Chandrayaan-1 was launched in 2008. The ISRO of today began its journey in 1962. Scientists like S.K. Mitra, C.V. Raman, Meghnad Saha, Homi Bhabha, Vikram Sarabhai, the vision of our founding fathers and successive governments. We are here today because of many people, even though news anchors will downplay everyone who came before 2014. क्या लंबे समय तक देश में स्पेस सेक्टर की अनदेखी हुई है और इस अनदेखी का कारण क्या राजनीतिक हो सकता है? We have to wonder if there was a lack of will supporting the ability of our systems and our intellect. I wonder, did we lack the political will earlier? We have gone from the days of the Antriksh scam under UPA to today when the same ISRO scientists have flawlessly executed this mission. Sonia Gandhi was willing to help Vijay Mallya, but not ISRO. Manmohan Singh was willing to help Vijay Mallya. He was helping Vijay Mallya, but not ISRO. पीएम मोदी ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि इसरो के हर बड़े मिशन में कैसे उन्हें साथ की जरूरत है और उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है, और इसलिए पीएम मोदी वैज्ञानिकों के साथ खड़े होते दिखते हैं। एक तरफ इसरो के वैज्ञानिक हैं जिनके फ्यूचर प्लान में कई सारे प्रोजेक्ट हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो इतिहास में ही अटकी है। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया उसमें नेहरू का जिक्र कई जगह पर, ये पंडित नेहरू में ही फंसे हुए हैं। देश में कुछ भी गलत होता है,
चाइना टेकिंग आवर लैंड से लेके प्राइस राइज से मणिपुर तक तुम लोग नेहरू की गलती बोलते हो, तो आज थोड़ा क्रेडिट भी दे दो. Credit where due, the Modi government indeed has exponentially increased budget to India's space sector. But credit also where due to Nehru, whose belief in science shaped India's audacious space exploration journey. This was a time when India was split along religious lines. We saw bloody riots, Hindu versus Muslim. But the politicians of that time focused on nation building and things that brought us together as a country, and not petty, narrow divisions. Leaders of that time urged us to rise above our differences and not be petty, because of which this week we all came together as a nation to celebrate the success of Chandrayaan-3. लेकिन इतना बड़प्पन you can't expect from our Indian news anchors, okay? पाकिस्तान रो रहा है क्योंकि उसने तो सिर्फ चांद को अपने झंडे पर लगाया है. उससे ज्यादा कुछ करने की औकात पाकिस्तान ने ना कभी की है और ना कभी सोची है. औकात सोचते नहीं है यार, औकात होती है. और भाई अगर आप लोग अपने आप को न्यूज चैनल बोलने की औकात रख सकते हैं तो फिर पाकिस्तान क्या चीज है? कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है यार इनको. खुशी के टाइम भी दूसरों को गाली दो. ज्ञान विज्ञान हो या तरक्की, कहीं हर तरफ धूम अपनी ये क्या चल रहा है भाई? लगा के उन्नति की तरफ देश जाने लगा. वाह वाह करो. वाह वाह. बहुत से लोग जो टीवी न्यूज देख रहे थे मून लैंडिंग देखने के लिए, उन्हें बहुत से इंडियन आइडल्स को भी झेलना पड़ा. देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए. व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना. Moon has its own romance, if I can use that word. At your age today, if we see India creating that history, what is it that you must be feeling? I'm feeling proud. You know why? Because now I can ask for मुझको चांद ला के दो, संग में तारे ला के दो, सारे के सारे ला के दो. And who knows, आगे जाके moon पे colonization possible हो. So this dream could come true, ma'am. This dream could come true. She was really singing about moon पे colonization. बात है शायरों का क्या होगा जो अपनी महबूबा को चांद जैसी बताते थे. महबूबा कहेगी अरे वहाँ तो गड्ढे हैं. But I think that's the challenge of science, and that's the beauty of science. That is the beauty of science. What a beauty. You want to say something? चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था. तुम तो बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था. खोया खोया चांद. Interestingly, चांद बोलने की देर है, and then you will see the kind of responses. चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मर्च बाय करो, जर्नलिज्म सपोर्ट करो. मजा आ गया यार, रौनक ही रौनक. बट इस सब के बीच देयर वाज वन थिंग मिसिंग. असली एस्ट्रोनॉट तो दिखाई नहीं अभी तक. शानदार लैंडिंग चंद्रयान-2 की. ये देखिए, ये इसरो का कमांड सेंटर और हमारा न्यूज रूम भी दिखाइए. यार क्यों सब चैनल्स अपना न्यूज रूम दिखाने पर क्यों तुले हुए थे? तुम लोग ने किया क्या था? और स्पेशली जी न्यूज का न्यूज रूम तो हम क्यों ही देखेंगे यार. सीटी हो जाए आप, पहले सीटी बजेगी. There's more. दीपक जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जिस तरीके से आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे. दीपक जी आपको भी बधाई जिस तरह आपके रोंगटे खड़े हो गए थे. आपके रोंगटे खड़े हो गए इसलिए आपको बधाई. बहन उसने फुल स्लीव कोट पहना हुआ था and you could see his रोंगटे through that. दीपक जी की घुटनों की दवाई शायद आपने ले ली थी उस दिन. Now that the landing is done, the next crucial step will be the experiments that will happen on the moon. The lander has 4 major scientific payloads that will study lunar quakes, thermal properties of the lunar surface, changes in the plasma near the surface, and a passive experiment to help accurately measure the distance between Earth and the moon. We wish ISRO all the best for these experiments and hope to hear a lot from them soon.
Meanwhile, TV news anchors can just go back to their झिंगुर लप्पू जैसी रिपोर्टिंग. पाकिस्तान की सीमा हैदर और झिंगुर वाली वायरल भाभी के बीच भयंकर झगड़ा चल रहा है. जी हाँ, सीमा सचिन राजी, लेकिन क्यों भड़की भाभी? सचिन के लिए आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया लप्पू, झिंगुर, आपको लगता है कि वो गलत था? इस वक्त हम सीमा के बच्चे को देख सकते हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं स्कूल में झंडा फहराने के लिए. देखिए इनके सर पे तिरंगे की टोपी है, हाथ में तिरंगा झंडा है. दावा है कि सीमा नाचती है तो पाकिस्तान को दर्द होता है. मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार. वहीं आज मिथिलेश भाटी ने नाम लिए बगैर सचिन और सीमा पर निशाना साधा. मिथिलेश ने कहा, उसको लगी इश्क की बीमारी, उसे लगी 6 बच्चों की अम्मा भी कुमारी. अब राखी भेजकर सीमा ने पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी सबको भाई बना लिया. तो मिथिलेश जी इसे बॉडी शेमिंग कहते हैं. हमें काम के हमें ना पता बॉडी सेविंग की. हमें एक सेविंग जाने जाते कहें दाढ़ी छील लो और दाढ़ी बनवा लो. सचिन, डिस्कशन तो देखिए आपके बारे में ही हो रहा है. मिथिलेश भाटी ने जिन शब्दों का जिक्र किया था आपके लिए, उस पर आपका रिएक्शन क्या है, ये भी जानना चाहते हैं. आपने उसके स्पर्म टेस्ट कराए, आपके गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं. ठीक है. अच्छा, ठीक है. आपने उसकी पोटेंसी टेस्ट कराई क्या? आपके पास पोटेंसी रिपोर्ट अच्छे अल्फाजों में भी कर सकते हैं. थोड़ी है जी, बहुत डिटेल में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है. इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है. Now, while India was on the moon and Modi ji was in Johannesburg, something else also caught our attention this week. The Economist is basically saying Indian media is covering foreign affairs, but they don't know anything about it. They are the economists, and they are not talking about all of the Indian media as a whole. They are specifically talking about a section of Indian media that has reduced discussions around India's foreign policy to the praise of one man and his government. They, which is the Economist, specially mention one Miss Palki Sharma and her news programs that form one section of the media which tends to be hyper-partisan, nationalistic, and often stunningly ill-informed. Now, Palki obviously didn't take being called stunningly ill-informed well. Do you know what's stunning? The level of Western arrogance on display here. How do I counter this stunning Western arrogance? By displaying my stunning ignorance. US magazine slams Indian media's coverage of Europe and the United States. Yeah, when you're arguing against being called ill-informed, kam se kam, tab to at least you should be totally factually correct and do some research properly. The Economist is not a US magazine, it's a British magazine. Arrogant British magazine. The thing is, India doesn't need lectures on diplomacy from The Economist. Sounds very familiar. आपको शायद ये बात दिलचस्प लगे कि हमारे यहाँ 21 भाषाओं में 5,600 अखबार और 3,500 मैगजीन छपती है, जिनको पढ़ने वालों की संख्या 12 करोड़ है. आपके देश के मुकाबले में कई ज्यादा है. एक थे नमस्ते लंदन के अर्जुन सिंह, दूसरी तरफ साक्षात मिस पालकी शर्मा. We have 3rd century manuscripts on military strategy and foreign affairs. 3rd century. People in the US were figuring out agriculture back then. चलो 3rd century manuscript तो ठीक है, but why are you again bringing in people from the US for the sins of a UK magazine? Economist is not American, like I said before. Now I agree that Indian media has several problems. But guess what we have never done? Voted for war. Wait. Say that again. But guess what we have never done? Voted for war. Indian media has never voted for war because they champion it every night, Palki, including your ex-colleague. अब एक बार आखिरी जंग हो जाए, एक बार आखिरी युद्ध हो जाए और हमेशा के लिए ये समस्या दूर हो जाए. अब आर-पार की लड़ाई चाहिए. The Economist piece made a special mention of Palki putting out misleading information on France to downplay internet shutdowns in India. Ms. Sharma and other pro-Modi pundits insist that India's behavior and its problems are no worse than any other country's. A report on the recent riots in France on Ms. Sharma's show included a claim that the French Interior Ministry was intending to suspend the internet in an attempt to curb violence. And thank God it's in Europe. If it was elsewhere, it would have been a human rights violation, she sneered. In fact, India leads the world in shutting down the internet for security and other reasons. The French Interior Ministry had anyway denied the claim a day before the show aired.
And that is the crux of the Economist's argument, that a section of Indian media anchors have become propagandists for the government, and that is what defines their international coverage. India Today, I have an idea for you. Your next hire should be Palki Sharma so you can get truly international gold standard level news discussions. और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। It may also interest you to know that many of the origins of your words come from Sanskrit. For example, Matru becomes mother, Bhratra becomes brother, Geometry becomes geometry, Trigonometry becomes trigonometry. Wouldn't that be wonderful? That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way.